दीपिका के बालों को देख के रणबीर कौन सा गाना याद आता है? बाल बच्चे वाली हूँ। बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है यार? पता नहीं, दीपिका फैमिली प्लानिंग हो रही है आपके यहाँ पे। बाल बाल देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल। दिल पता नहीं अगर मेरे बच्चे होंगे या नहीं, लेकिन इसके तो ज़रूर होंगे। सो आई वुड लाइक टू बी हर चिल्ड्रंस गॉडफादर। आई डोंट नो इफ शी और हस्बैंड विल अलाउ मी, बट इट विल बी नाइस टू मेंटोर हर चिल्ड्रन। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने चीटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। सो बेसिकली इट्स यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ say it couple of times and वो आ जाता है. But and all these lines were in one shot. You know, there was no cut, which made it harder. But it was also fun to do it because very rarely you get songs like this, you know, to perform in. So yeah, it was all done in normal speed. Ye Jawani Hai Diwani is a film about relationships. But when I say relationships, it's not only about boyfriend-girlfriend relationships. It's also about friends, family. It's also the story of the journey of these 4 different characters, how we all influence each other. When we sort of meet, we become friends, and how we influence each other's lives. And you know, also the importance of having special people around you in your life. You know, you can have the most amazing life, but if you don't have those special people to share it with, you know, then life itself is pointless. So I think, so there's various things to the film, but also like Ranbir always says, it's an entertaining film. It's a film that we've made to entertain the audience. So it's a little bit of everything. And then you throw in a song like बलम पिचकारी एंड बदतमीज दिल। ऋषि कपूर जी ने कहा है कि वो एक बार फिर से आवारा को बनाना चाहते हैं और एक साथ आप दोनों आने वाले हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? और एक बार फिर से आर के स्टूडियो को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोग। You know, मैं पापा और मम्मी के साथ रहता हूँ, लेकिन अभी तक पापा ने मुझे ही नहीं कहा है, तो मुझे भी एक्चुअली पेपर में ही मैंने पहली बार पढ़ा है। जहाँ मेरा सवाल है एज एन एक्टर, नॉट बिकॉज आई कम फ्रॉम द सेम फैमिली हुज मेड द मूवी, आई वुडेंट लाइक टू रीमेक आवारा बिकॉज आई थिंक अगर आप राज कपूर, नरगिस जी, शंकर जयकिशन, पृथ्वीराज कपूर, उन सबको वापस ले आओ इस दुनिया में, फिर शायद वो बन सकती है पिक्चर। आई डोंट थिंक हमारी कोई औकात है वो पिक्चर को टच करने की। आई थिंक द फिल्म वाज मेड टू इट्स बेस्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज एंड आई वुडंट लाइक टू टच इट। I read that you said Deepika is one of the actresses who's intimidated you the most. Why did you say that? And also Deepika, do you feel the same way about Ranveer? Well, I said that because I know Deepika so well, and I had worked with her 5 years back in our second film together, Bajna Hai Hasino, and having worked with her in Ye Jawani Hai Diwani, she really surprised me with the kind of performance she was bringing in, with the kind of intelligence, her talent that she was bringing in, and while acting with her, you know, sometimes you act with a person and you know how that person is going to react, or you know how that person is going to say a certain dialogue, but she was constantly, you know, surprising, working in moment to moment, and I said it purely because of that. She really intimidated me with her talent. I definitely think that we had an equation on set that I didn't really expect. I think somewhere we had a very spontaneous equation, and I felt like every time I gave him something, I was getting something back. And it's so strange because yesterday I was shooting for Ramleela with Mr. Bansali, and he pointed out exactly the same thing with Ranbir. He said with Ranbir, you just give him anything and it comes back added with something, but it also comes back with so much ease. And that's what I love about him. I think the fact that anything that he does, whether it's dance, whether it's dialogue, whatever he does, I've never seen him prepare or rehearse. It always flows, it comes very naturally. उसी आर्टिकल में आपने ये भी कहा था कि दीपिका के बच्चों के आप गॉडफादर बनना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वेल मैं यही गॉडफादर का मतलब क्या होता है कि समवन हु यू रियली आर फॉन्ड ऑफ, उनके जो बच्चे होंगे, यू वांट द किड्स टू काइंड ऑफ लुक अप टू, यू वांट टू काइंड ऑफ मेंटोर द किड्स, यू नो, यू वांट टू गिव देम करेक्ट वैल्यूज़। पता नहीं अगर मेरे बच्चे होंगे या नहीं, लेकिन इसके तो ज़रूर होंगे। सो आई वुड लाइक टू बी हर चिल्ड्रंस गॉडफादर। आई डोंट नो इफ शी और हस्बैंड विल अलाउ मी, बट इट विल बी नाइस टू मेंटोर हर चिल्ड्रन। दीपिका, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? He's thinking, I mean, I haven't even thought of that. So he's thinking way ahead. When it happens, we'll think about it. We shall discuss this. पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने चीटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। So basically it's you just have to kind of
say it couple of times and वो आ जाता है. But and all these lines were in one shot. You know, there was no cut, which made it harder. But it was also fun to do it because very rarely you get songs like this, to perform in. So yeah, it was all done in normal speed. दीपिका के बालों को देख के रणबीर कौन सा गाना याद आता है? बाल बच्चे वाली हूँ. बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है यार? पता नहीं, दीपिका फैमिली प्लानिंग हो रही है आपके यहाँ पे. Well, it was lovely, and I think I've spoken enough about this. It's always wonderful to work with such talents like Madhuri ji, and she was so gracious, and she added so much of dignity to a movie, and I'm really grateful that I got this opportunity.